Okay, Assalamu alaikum. Welcome to the next week of digital communication class. And in this week, we will be mainly talking about the channel, different channel effects, which include noise and intersymbol interference, and the eye diagram, which helps us to visualize ISI. What you need to note is that there are a lot of concepts and theoretical knowledge involved in this part of the course. So you are encouraged to make or write your notes as you listen through the lectures. It is very important because those notes will serve as your reference for different topics in this chapter. So first of all, we just have a quick recap of what we did last week. So last week there were two parts of the lectures. The first part was focused on digital modulation, the second part on multiplexing or multiple access. Within digital modulation, we looked at what are baseband and passband signals and what is baseband and passband modulation. After having clarified the basic differences between these terminologies, then we moved on to discuss what is digital modulation, why we use sinusoid as a carrier, and how we can represent sinusoids as phasors in the form of a polar diagram. And from the polar diagram we can then move on to IQ plot, which is of the rectangular coordinates of the polar diagram. And then we also looked at the IQ modulation at the transmitter and the demodulation at the receiver. Then we had further discussion of the IQ plot, which turns into a constellation diagram, and how each symbol on the constellation diagram can help us deduct information about the type and level of modulation. And then we looked at the digital modulation techniques, the keying techniques, as well as the QAM, some examples. And we concluded that section by studying a bit about the bit rate and the symbol rate. And then in the second part of the lecture last week, we looked at multiplexing or multiple access. We compared them to note their similarities or differences, and then we went on to discuss different types of multiplexing or multiple access, like time division multiplexing, frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, including both dense and coarse types, code division multiplexing or multiple access, which comes in two types, direct sequence or frequency hopping, and then spatial diversity, and then polarization diversity. And finally we discussed orthogonal frequency division multiplexing or OFDM. So this is a quick recap of what we did last week. And what we are going to do this week is, because there was a lot of interest in and questions related to CDMA, so I have included a little bit of more information on CDMA just for the sake of interest. So basically then we will move on to discussing the channel. So what is a channel, what are the different classifications of the channel? We'll spend some time on that, and then we will go on to discuss channel effects, and the two major effects of the channel are noise and ISI. And basically this week's lecture is focused on looking in detail at ISI, the intersymbol interference. So its theory, its background, what it is, and how we deal with it. Then in that respect we'll be looking at the raised cosine filter and equalization, as well as the qualitative analysis of ISI, which is done through the eye diagram. So these will be the main focus topics of this week. So the learning outcomes for this part of the course are that you should be able to distinguish between frequency hopping spread spectrum and direct sequence spread spectrum. You should be able to outline the working principles of CDMA. Thereafter you should be able to characterize the channel types and their classifications. You should be able to differentiate between the channel effects. You should be able to analyze the effects of ISI on the received pulses. You should be able to infer how to avoid ISI at sampling times.
and you should be able to compare the ideal Nyquist filter with the raised cosine filter. Okay, so first a little bit of further insight into CDMA. So basically, as you can see, this is very graphical explanation. So we have our baseband signal, our speech signal, let's say, occupying a bandwidth of approximately 15 kilohertz. So that's our speech signal, and then in the direct sequence spread spectrum, it is made to spread. As you can see, it is a spread signal now occupying a bandwidth of almost 5 megahertz, which is the typical bandwidth of a direct sequence spread spectrum channel. So it is spread by a pseudo random code, and then it is transmitted. So while it is being transmitted, we can expect that some background noise will be added. There might be some external interference which is added. There might be some other cell interference added, whereas the same cell interference from other users. So we can imagine all sorts of these things getting added to our signal and affecting it. So the signal we receive at the receiver, it's this spread signal combined with all of these different impairments. So figuratively we can say that it looks something like this. So it's a mix of everything really, as you can see. So there are a lot of impairments added, and then we do the direct sequence despreading. So here we're spreading, we do the despreading, and in despreading we use cross correlation. So anyways, when all this noisy or distorted signal is despread, our required signal is obtained, decoded. We are able to despread it, while all the others, they remain spread. So that's related to the unique code associated with our signal. So that is how we are able to obtain or acquire our desired signal from a noisy signal received by the concept of CDMA despreading. So this is the idea of CDMA. Now comparing the two types of CDMA, the frequency hopping spread spectrum and the direct sequence. So the direct sequence, as explained in the last slide, that usually happens within a larger bandwidth of, let's say, 5 megahertz, but it is happening at low power. Whereas in frequency hopping, the carrier bandwidth is small. As you can see, these are all different carriers, but the signal is made to hop between different carrier frequencies within the allowed band. So here in this example, the band of 2.4 to 2.4835 gigahertz is taken, which is the 2 gigahertz ISM band. The same band is used by the Wi-Fi or the wireless LAN. So the frequency hopping waveform, it hops randomly between these different carriers, as we have also discussed in the introduction to CDMA, and they normally operate at a higher RF power as compared to the direct sequence. So that is how, these are the main two types of CDMA, and they're different in their approaches to how they spread the spectrum. So frequency hopping spreads it like this, with individual carriers of a smaller bandwidth but spread over the whole band, where the whole band available is divided into 5 megahertz chunks for the direct sequence, and the whole signal is spread into this 5 megahertz using some spreading code. So that was a comparison of these two techniques. Okay, so this is the part of the lecture where you're supposed to be making some notes. So you will be listening to some explanations, and you should be noting them down wherever you need them. So the first thing we are going to talk about is channel. How do we define a channel in the context of a communication system? So the channel can be defined as the propagating medium or the electromagnetic path connecting the transmitter and the receiver.
So you have a general idea of the channel, what it is. It basically connects the transmitter and the receiver. So whatever is there between the transmitter and the receiver, that is the channel. So that could be the basic definition of channel. What you have to appreciate that the channel can act as a system. Effectively, it is a system. And as you know, different systems, they respond differently to different input signals. So same is the case with channels. Different channels, they will respond in different manner to same input signals. And just like in systems, you have an input signal represented by x of t, you have the output signal represented by y of t, while the system itself is represented by h of t, which is the impulse response of the system. And in frequency domain, your input signal is x of f, your output signal is y of f, while your system in frequency domain is represented by h of f, which is the frequency transfer function of the system. So you can consider your channel as a system. So your channel can also have an impulse response, and in fact studies which are concentrated on understanding the behaviors of channels, they in fact study the impulse response of the channels as one of the parameters. So channel is taken as a system. You also have to appreciate that the channel more or less also behaves like a filter. So because it will not be able to pass all the frequencies, every channel has a certain range of frequencies that it passes without much attenuation or distortion. Other frequencies are not easily passed, either they are attenuated or distorted. So channels always have a band limited response. So in that sense they also behave like filters. That's what you need to remember as well when you're talking about channels. So effectively they will be behaving like filters. Now when we come to talk about the communication channel, yes, what is a communication channel? So communication channel is the means for the transmission of information across a communication network accomplished in the physical layer. So in our context, we are talking about the physical layer, and we are referring to our communication channel as the means through which we will be able to transfer information across a communication network from one side to the other, from transmitter to receiver, and so on. Now we come to different channel types. There are different classifications of the channel. So we come to different channel types. So there are guided channels. You probably know there are a few examples of guided channels. So for example, the channels which are made of wires or coaxial cables or fiber optic cables or waveguides, these are all examples of guided type of channels. And then you also have unguided channels. So for example, the atmosphere or the empty space, or specifically the channels what we call the wireless broadcasting channel or the mobile radio channel or the satellite channel. These are all examples of the unguided types of channels. So the classification or the differentiation of channels can be on the basis of types, guided or. Okay, now we continue our further discussion of the channel and its related parameters. So a channel can be memoryless. So you've studied this term, but you need to refresh that what does the term mean with respect to the channel. So memoryless channel would mean that, for example, at any instant of time, the channel output depends on the channel input only at that time and not on the inputs on the previous inputs. So in that sense it is memoryless.
And then you need to be clear what is meant by a discrete channel. So discrete channel is simply a channel that is designed to handle discrete messages. So limited number of possible states of the message. Such a channel which is designed to handle such messages is a discrete channel. And then LTI, linear time invariant channel. Okay, you've studied that in DSP and in signal systems. What are linear systems? Linear systems are systems simply where the inputs and the outputs are linearly related. That's one way of defining it. Another way you can say that the channel, if it is a linear channel, it will follow the laws of superposition. So that's another way of defining linear systems. So that's what the term linearity would mean in respect of channel. When we talk about time invariant, once again it's the same definition that you've studied of LTI systems. Time invariant would mean that the system is not a direct function of time, or that the system response does not depend on or it does not change with time. So this is what classifies as any system as LTI. So channel can be memoryless, channel can be discrete, channel can be LTI, and then channel can be band limited. So band limited, we have discussed this earlier, that the channel behaves like a filter. So basically it's a band limited system. It will pass a certain range of frequencies without much distortion or attenuation, but for other range of frequencies there will be attenuation. So a band limited channel will disperse or spread a pulse waveform passing through it. That's what you have to remember, because pulse signal has an infinite bandwidth requirement and channels mostly are band limited. So when a pulse passes through a channel which is by definition band limited, so the pulse will spread or it will disperse. So that's what you need to remember. So these are different types of channel that might exist. Okay, that's what you need to remember. And we will discuss one particular channel in focus, that is a free space channel. So how can we define a free space channel? First of all, a free space channel can be defined as a channel that is free of all the hindrances to RF propagation. That means absorption, reflection, refraction, diffraction, there is nothing. There's nothing there. So all these different types of effects that RF signals might experience, we assume that the channel is free of all the hindrances. So there is no atmospheric effect at all. That is what a free space channel is. Now if there is any atmosphere in the channel, it must be perfectly uniform and meet all these conditions. फिर ही हम कह सकते हैं कि free space channel है. तो when we make the assumption of free space channel, we are actually assuming कि जब मेरा ये सिग्नल RF सिग्नल जब प्रोपगेट करेगा, ट्रैवल करेगा, तो एक तो ये कि इसे जो जितना भी चैनल है उसमें यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट मिलेगी. तो वी हैव टू अज्यूम दैट आवर एटमॉस्फेयर इज़ यूनिफॉर्म. और दूसरी बात ये कि हमारा सिग्नल जब पास होगा कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट नहीं होगा. सो व्हेन वी मेक एन अजम्पशन दैट ये फ्री स्पेस कम्युनिकेशन है या फ्री स्पेस प्रोपगेशन है, तो वी आर मेकिंग दीज अजम्पशंस कि ये सब कुछ नहीं होगा बीच में. ऑल्सो वी अज्यूम दैट द अर्थ इज़ इन्फिनिटली फार अवे और दैट इट्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ ज़ीरो. तो यहाँ तक कि हम ये भी अज्यूम करते हैं कि अर्थ सरफेस से भी सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए या तो हम ये अज्यूम करें कि सरफेस बहुत दूर है, या ये अज्यूम करेंगे उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज़ीरो है. So based on these assumptions in free space channel, then what happens is that we say that the RF energy arriving at the receiver is assumed to be a function of only distance from the transmitter. तो जो सिग्नल हमें रिसीव होता है, अगर हम फ्री स्पेस चैनल अज्यूम कर रहे हैं, तो वी से कि द सिग्नल दैट वी रिसीव इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर. और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ सेपरेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इस पे डिपेंड कर रहा है. So these are the nodes or the conditions associated with the free space channel.
एंड देन देर आर डिफरेंट चैनल मॉडल्स, ठीक है, जिसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स में डिफरेंट चैनल मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ मॉडल्स हैं, या तो हम कहते हैं कि चैनल जो है वो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल क्या होता है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल। मेमोरीलेस होगा, डिस्क्रीट होगा, इस दो स्टेट्स होंगी विद 2 स्टेट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। और सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ 1 इफ़ अ 0 इज़ ट्रांसमिटेड इज़ द सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ 0 इफ़ 1 इज़ ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो डैट मीन चूँकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें नॉइज़ शामिल होगी, और नॉइज़ जो है उन दो स्टेट्स को अफेक्ट कर सकती है। चूँकि बाइनरी चैनल है तो इसकी इनपुट की 2 ही स्टेट्स होंगी, 0 और 1, और इसकी आउटपुट की भी 2 स्टेट्स होंगी, 0 और 1। So there is a possibility that because of noise the transmitted symbol is changed। तो ये तो probability of error है, ये दोनों केसेस की सेम होगी, 0 भेजे 1 रिसीव करें या 1 भेजे 0 रिसीव करें, ये दोनों probabilities of error सेम हो अगर, तो that becomes a binary symmetric channel। तो या तो चैनल मॉडल्स में हम चैनल को अज्यूम करते हैं कि बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है, या हम बाज़ दफ़ा ये भी अज्यूम करते हैं कि डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल है, बाइनरी नहीं है लेकिन डिस्क्रीट मेमोरीलेस है, या हम अज्यूम करते हैं कि गॉसियन चैनल है। उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जी गॉसियन चैनल ऐसा होता है कि जिसमें गॉसियन नॉइज शामिल होगी। सो दीज आर द 3 मोस्ट पॉपुलर चैनल मॉडल्स दैट आर फॉलोड एंड यूज्ड। एंड देन देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एज वेल, जो कुछ टर्म्स हमने पढ़ी हैं उसकी बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल चैनल लीनियर है या नॉन लीनियर है। सो अ चैनल जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वी अज्यूम कि जी ये चैनल लीनियर है, जबकि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम 2 चैनल अज्यूम करते हैं, हम नॉन लीनियर अज्यूम करते हैं। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, एक एक डिस्कस कर रहा हूँ। फिर चैनल टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंग है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर जो गाइडेड मीडिया होते हैं उसमें हम चैनल को अज्यूम करते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, वी अज्यूम कि ये टाइम इनवेरिएंट चैनल है। और जो वायरलेस कम्युनिकेशन के से रिलेटेड चैनल्स हैं उनको हम टाइम वेरिएंट अज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल रेडियो चैनल जो है वी क्लासीफाई इट एज ए टाइम वेरिएंट चैनल। इसी तरह बैंड लिमिटेड या पावर लिमिटेड, तो कुछ चैनल्स जो हैं वी कैटेगराइज देम अंडर बैंड लिमिटेड, जैसे टेलीफोन चैनल है वो बैंडविड्थ लिमिटेड है अप टू 4 किलोहर्ट्ज़, इट्स अ बैंड लिमिटेड चैनल। या फिर पावर लिमिटेड चैनल होते हैं, उस पर हम एक ख़ास पावर से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल सैटेलाइट चैनल्स दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर लिमिटेड चैनल। तो आइडियली तो क्या होना चाहिए कि आइडियली चैनल शुड हैव इन्फिनिट बैंडविड्थ, हालांकि इन रियलिटी देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन द बैंडविड्थ। ऑल्सो आइडियली अ चैनल शुड नॉट बी करप्टेड, ठीक है, उस चैनल के ज़रिए कोई करप्शन ऐड नहीं होनी चाहिए। बट इन रियलिटी वी नो दैट देर आर मैनी इम्पेयरमेंट्स दैट आर एडेड टू द मैसेज एज दे पास थ्रू द चैनल। तो इसी वजह से फिर जो एक और क्लासिफिकेशन हो सकती है कि चैनल नॉइज़ी है नॉइज़लेस है, वो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़ा है कि नॉइज़ी चैनल के लिए देर आर डिफरेंट थ्योरम्स, डिफरेंट अजम्पशंस, डिफरेंट इक्वेशंस, और नॉइज़लेस चैनल के लिए देर आर डिफरेंट थ्योरम्स, डिफरेंट इक्वेशंस एंड डिफरेंट अजम्पशंस। So these are some of the classifications of channels. Okay, so let us look at the 2 major channel effects. One is channel noise and the other is intersymbol interference. When we come to discuss noise, we have to consider that thermal noise, interference from other users, interference from circuit switching transients, all of them, they can cause errors in detecting the pulses carrying the digitized samples. Also, channel induced errors can degrade the reconstructed signal quality very quickly. So if the channel noise is small, there will be no problem in detecting the presence of waveforms.
but when the channel noise is not small, then it can degrade the signal quality, and then the detection of presence of waveforms can become difficult. So small noise does not corrupt the reconstructed signals. In this case, the only noise present in the reconstruction is the quantization noise. But on the other hand, if the channel noise is large enough to affect our ability to detect the waveforms, so the resulting detection error causes reconstruction errors. ठीक है, तो फिर मसला ज़्यादा हो जाता है. नॉइज़ एज वी नो कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द सिस्टम. बहुत सारी टाइप्स हैं, हमने पढ़ी हुई हैं पहले. कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं. And we've also studied white noise, which is basically an assumption or an idealized form of noise. On the other hand, when we come to discuss inter-symbol interference, we have to remember that the channel is always band limited. So a band limited channel will always disperse or spread a pulse waveform passing through it. So when the channel bandwidth is much greater than the pulse bandwidth, the spreading of the pulse will be slight. But when the channel bandwidth is close to the signal bandwidth or less than it, the spreading will exceed a symbol duration, and it will cause the signal pulses to overlap. This overlapping is called inter-symbol interference. ठीक है, तो like any other sources of corruption or impairment, ISI can cause the system to degrade and we can have higher error rates. So ये काफ़ी मुश्किल फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस है इस सेंस में कि जी सिग्नल पावर इंक्रीज़ करने से ISI का हल नहीं निकलेगा. इट विल नॉट ऑलवेज इम्प्रूव द एरर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो सिग्नल पावर इंक्रीज़ करने से शायद हम नॉइज़ को तो टैकल कर लें, लेकिन सिग्नल पावर इंक्रीज़ करने से हम ISI का हल नहीं निकाल सकते. So this was just a few quick notes about the two major channel effects, noise और ISI, और दोनों में difference क्या है. So we'll now be looking at ISI in a bit of more detail. Okay, so let us look at inter-symbol interference in a bit of detail. So what we are showing you here on the slide is a concept that in fact there are various filters throughout the communication system. So the transmitter behaves like a filter, the channel behaves like the filter, and even the receiver behaves like a filter. Okay, so basically the whole system is behaving like a filter. So if we lump all the filtering effects into one overall equivalent system transfer function, तो वो ये बनता है हमारे पास h of f represents the system transfer function, and that is basically a combination of the ht of f, which is the transmitting filter, hc of f, which is the filtering within the channel, and hr of f, that is the receiving filter. ठीक है, तो फिर ये जो h of f है हमारा, it then represents the composite system transfer function due to all the filtering at various locations throughout the transmitter, channel and receiver chain. ठीक है, तो अब अगर हम एक बाइनरी सिस्टम को अज्यूम करें विद अ कॉमन PCM वेव फॉर्म, लेट अस से NRZL, पॉजिटिव या नेगेटिव पल्सेस होंगी. ठीक है, NRZL. सो लेट अस से कि द डिटेक्टर, यहाँ पे रिसीवर पे डिटेक्टर है, द डिटेक्टर हैज़ टू मेक अ सिंबल डिसीजन बाय कंपेयरिंग अ सैंपल ऑफ द रिसीव्ड पल्स टू अ थ्रेशोल्ड. तो जो भी इसे पल्स रिसीव हो रही है इधर रिसीविंग फ़िल्टर से गुजरने के बाद उसका सैंपल ले रहा है, और उस सैंपल की वैल्यू की बेसिस पे इसने डिसाइड करना है कि हाँ भाई ये पल्स पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, और फिर उसकी मदद से इसने डिसाइड करना है कि ये 0 था या 1 था. ठीक है, तो अगर हम इस वेव फॉर्म की बात करें NRZL की, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 0 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्टर जो है इट डिसाइड्स दैट अ बाइनरी 1 was sent if the received pulse is positive and a binary 0 was sent if the received pulse is negative.
ठीक है, तो इसकी डिसीजन सिंपल है, बाइनरी है, ज़ीरो बीच में इसकी डिसीजन हो गई, ज़ीरो इसकी थ्रेशोल्ड या बाउंड्री हो गई, डिसीजन बाउंड्री. बट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम फिल्टरिंग the received pulses can overlap with one another as shown here. ठीक है, तो हमारे पास पल्सेस, सबसे पहली बात तो ये कि डिस्टॉर्ट होंगी. अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पल्स लाइक पल्सेस थी, ठीक है ना, पतली पतली पल्सेस थी ऑलमोस्ट इम्पल्स लाइक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि ऑल ऑफ देम द सिस्टम इटसेल्फ इज़ बिहेविंग लाइक अ फिल्टर, तो ये स्प्रेड होंगी, वो एजेस शार्प नहीं रहेंगे. ठीक है, तो स्मूथ ऐसे एजेस हो जाएंगे. और दूसरी बात यह है कि एक्सेसिव फिल्टरिंग की वजह से ये स्प्रेड होकर एक दूसरे के टाइम पीरियड के साथ ओवरलैप कर सकती हैं. तो एज़ यू कैन सी यहाँ तो बड़ा क्लियर था कि हर इतनी देर के बाद अगली पल्स आएगी, तो पल्स के सेंटर्स के दरमियान इतना गैप था. तो अगर वो स्प्रेडिंग होती है थोड़ी बहुत तो वो ज़रा स्प्रेड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सॉर्ट ऑफ ओवरलैप नहीं आता. बट इफ़ द फिल्टरिंग इज़ एक्सेसिव तो वो स्प्रेडिंग इतनी हो जाती है कि एक्चुअली इट स्प्रेड्स इनटू द सेकेंड पल्सेस ड्यूरेशन, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. बल्कि इनफैक्ट इस टाइम पे जो है ये 3 पल्सेस का आपस में ओवरलैप है. ठीक है, तो स्प्रेडिंग ज़्यादा करके दिखाई है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो द रिसीव्ड पल्सेस कैन ओवरलैप विद ईच अदर एंड द टेल ऑफ अ पल्स, जैसे इस पल्स की टेल है, डैट कैन स्मीयर या स्प्रेड इनटू द एडजेसेंट सिंबल इंटरवल्स. ठीक है, ये अगले सिंबल का इंटरवल था यहाँ पे, ये उसके अंदर ओवरलैप कर गई. सो इट कैन smear into adjacent symbol intervals, thereby interfering with the detection process. तो अब डिटेक्शन में मसला होगा. ठीक है, स्पेशली जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पल्सेस कंबाइन हो रही हैं, वहाँ पे डिटेक्शन में मसला हो सकता है. ठीक है, तो जब डिटेक्शन में मसला होगा तो फिर इट विल डिग्रेड द एरर परफॉर्मेंस, फिर एरर्स बढ़ जाएंगे. तो ये जो जब ये स्प्रेड होके नेबरिंग पल्स के साथ इंटरफियर करना शुरू कर दे, दिस इज़ कॉल्ड इंटर-सिंबल इंटरफेरेंस. This is the concept of inter-symbol interference, and that can happen even when there is no noise. ठीक है, तो even in the absence of noise, the effects of filtering and channel induced distortion, they can lead to ISI. Sometimes ऐसा होता है कि हमें चैनल का ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन होता है या नोन होता है. ठीक है, तो फिर हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होता है इस तरह से ताकि हम ISI को मिनिमाइज़ कर सकें. और बाज़ दफ़ा हमें चैनल का ही नहीं पता होता, हमें फिर ट्रांसमीटर या रिसीवर की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. सो इट बिकम्स अ ग्रेट चैलेंज. ठीक है, तो ये जो हम रेक्टेंगुलर पल्सेस ट्रांसमिट करेंगे, द रेक्टेंगुलर पल्सेस ट्रांसमिटेड, दे विल अराइव एट द रिसीवर विदाउट डिस्टॉर्शन ओनली इफ़ द चैनल हैज़ इनफिनिट बैंडविड्थ. जबकि रियल में क्या होगा, अ टिपिकल रेक्टेंगुलर ट्रांसमिटेड पल्स ऑफ ड्यूरेशन कैपिटल T will arrive at the receiver with non-zero rise time, non-zero fall time because of filtering, and because of the fall time the pulse will spill over into the following symbol interval, and this will cause interference between symbols, adjacent symbols, और इस इंटरफेरेंस को जो है हम फिर ISI कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ISI. तो नॉइज़ हो ना हो ISI हो सकती है. और जैसा मैंने डिस्कस किया कि जी सिग्नल पावर इंक्रीज़ करना जो कि नॉर्मली नॉइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो काम नहीं करेगी. ठीक है ना, उससे ISI का हल नहीं होगा. तो ISI इज़ चूँकि अ टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, नाम तो हम इसे इंटरफेरेंस कह रहे हैं बिकॉज ये दो सिम्बल्स की आपस में इंटरफेरेंस है, एक सिंबल दूसरे को इंटरफेयर करता है. लेकिन बाय नेचर चूँकि शेप मुतासर हो रही है, ठीक है ना, बाय नेचर इट इज़ अ डिस्टॉर्शन. और डिस्टॉर्शन को हैंडल करने के लिए हम कौन से प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड इक्वलाइजेशन. तो बेसिकली जो ISI को हैंडल करने का जो तरीका है वो भी इक्वलाइजेशन है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू ISI? इफ़ हायर SNR or higher power cannot solve it, what can? So Nyquist actually investigated this thing. He investigated the problem of specifying a received pulse shape so that no ISI occurs at detector. So Nyquist worked on it, and he showed that the minimum bandwidth needed to detect RS symbols per second without ISI
is RS by 2 Hertz. And basically, when does that happen? When your overall system transfer function is made rectangular. So this is what he discovered, that if your overall system transfer function is like an ideal low pass filter, then it is possible to avoid intersymbol interference. So this becomes the target, as we saw on the last slide, that the overall system transfer function is basically the product of the transfer functions of the individual components, the transmitter, the channel, and the receiver. So if effort can be made to end up with an overall transfer function which looks like this, then it is possible to avoid intersymbol interference. So this is called the ideal Nyquist filter. Obviously, as you can see, that it's like an ideal low pass filter, so it is called an ideal Nyquist filter. And what do you think it will look like in time domain? You know, it's a rectangular or a pulse, a rect or a pulse in frequency domain. What does it look like in time domain? So the time domain representation of an ideal Nyquist filter, which is a rectangle or a rect function in frequency domain, if we use inverse Fourier transform, that is a sinc function. So that's what we get. So the equivalent of rect in frequency domain in time domain, it is a sinc function, as you can see here. Okay, so this is that sinc with its zero crossing at t and then multiples of t. So a sinc function of the form h of t is equal to sinc of t by capital T. That's what we get in time domain. This sinc shaped pulse is called the ideal Nyquist pulse. So this is the ideal Nyquist pulse. This figure is showing you multiple sincs, but I am just talking about one. So this is the ideal Nyquist pulse. This is also another ideal Nyquist pulse. So any pulse of this shape, of the sinc shape, is called ideal Nyquist pulse. So what did Nyquist show? He showed that if each of the received pulse is of the sinc form, so in time domain, if each of the received pulse is made to be of the sinc form, then pulses can be detected without ISI. तो ये जब उसने रिसर्च की नाइक्विस्ट ने, तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरी जो पल्सेस मुझे रिसीव हो रही हैं, डिटेक्शन से पहले अगर मैं उनकी शेप ऐसी कर दूं कि वो सिंक फंक्शंस लगें टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली जो है वो यानी कि रेक्टेंगल होगा. एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट, देन आई एम एबल टू सर्वाइव विदाउट ISI. अब ये इसी फिगर से पता चलेगा, तो इसी फिगर को हम आगे डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड. द Nyquist चैनल फॉर जीरो ISI. सो इन द फिगर आर टू सक्सेसिव पल्सेस, सिंक पल्सेस, ठीक है ना, HT और H of t माइनस टी, टू सक्सेसिव पल्सेस या सिंक पल्सेस कह लें आप, या Nyquist पल्सेस कह लें. तो एक ये है और फिर उससे अगली पल्स है. और एज यू कैन सी द टेल ऑफ H of t, it passes through zero amplitude at this time t. तो at capital T ये जो सेकंड पल्स है ये अपनी पीक को पहुंच रही है और ये उसकी सैम्पलिंग का टाइम है. हर पल्स को उसके पीक टाइम पे सैम्पल करना है, ठीक है. तो इस वाली पल्स को इस टाइम पे सैम्पल करना है, इस वाली पल्स को इस टाइम पे सैम्पल करना है. तो जिस वक्त इस दूसरी पल्स को सैम्पल करना है, उस वक्त ये जो पहली पल्स है दैट इज़ पासिंग थ्रू ज़ीरो एम्पलीट्यूड. Likewise, all the tails they pass through zero when any other pulse of the sequence is to be sampled. So for example, जब इसको सैम्पल करना है तो ये ज़ीरो को क्रॉस कर रहा है, इससे जो अगली पल्स यहाँ पे आएगी उसकी पीक यहाँ पे होगी. तो जब उससे सैम्पल करना है तो ये दोनों ज़ीरो हैं. तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट ऑल द अदर pulses they are zero at the time when one particular pulse has to be sampled. That is how, assuming that the sampling timing is perfect, देर विल बी नो ISI डिग्रेडेशन. इसलिए कि जिस वक्त हम एक पल्स का सैम्पल लेंगे, दूसरा पल्स जो है अपनी ज़ीरो क्रॉस कर रहा होगा, तो वो स्प्रेड तो हुई है, लेकिन वो स्प्रेडिंग जो हुई है उस वक्त उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो है, यानी कि वो डिटेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा. सो दिस इज़ व्हाट Nyquist ऑब्जर्व्ड एंड कंक्लूडेड कि अगर हम इस तरह से काम चलाएं
तो हो सकता है. Okay, so continuing our discussion of Nyquist and bandwidth and ISI. So for baseband systems, जितना हमने पिछली स्लाइड से सीखा है, the bandwidth required to detect 1 by t of such pulses या such symbols per second is then equal to 1 by 2t, जैसा हमने HFF की शेप में देखा. So without ISI, a system with a bandwidth W is equal to 1 by 2t, which is equal to Rs by 2 Hz, it can support a maximum transmission rate of 2W, which is 1 by t, which is Rs symbols per second. तो ये एक लिमिटेशन लग गई उस पर कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट कितना वो सपोर्ट कर सकता है. And because it's an ideal low pass filter, rectangular 90 degrees angle, such ideal filters are not realizable. तो प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ होंगी. Their approximations are practical, so that is why they are used. The Nyquist filter या Nyquist pulse, ये दोनों terms generally they are used to describe a general class of filtering and pulse shaping that satisfy the zero ISI at sampling times criteria. तो कोई भी ऐसी pulses जो कि या filters जो कि ये condition satisfy कर दें कि sampling time के वक्त ISI ज़ीरो हो, उन्हें हम Nyquist filters या Nyquist pulses की कैटेगरी में शुमार करते हैं. द मोस्ट पॉपुलर वंस आर रेस्ट कोसाइन और रूट रेस्ट कोसाइन, क्योंकि हम डिस्कस भी करेंगे आगे. तो बेसिकली ये जो है हमारा टारगेट क्या है कि हमने पल्स को शेप देनी है अब टू रिड्यूस ISI. व्हाट आर आवर गोल्स एंड ट्रेड ऑफ्स? ज़ाहिर बात है हम चाहते हैं कि जितनी कम से कम बैंडविड्थ लगे और हमारा काम भी हो जाए. सो वी वांट अ कॉम्पैक्ट सिग्नल स्पेक्ट्रम. उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि या तो हमें हायर अलाउरेबल डेटा रेट मिल सकता है या फिर ये कि ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है वो स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी वांट. लेकिन हम बैंडविड्थ को कितना कम से कम कर सकते हैं उसकी अब एक मिनिमम लिमिट आ गई अकॉर्डिंग टू Nyquist कि नहीं, अगर आपने ज़ीरो ISI मेंटेन करना है तो एक ख़ास बैंडविड्थ से कम आप नहीं जा सकते, नहीं तो फिर ज़ीरो ISI नहीं रहेगी. ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक मिनिमम लिमिट हमारे पास आ गई बैंडविड्थ पे. So what we want to do is that we want to compress the pulse bandwidth, and that's what we will accomplish by pulse shaping with the Nyquist filter. तो जितना हम बैंडविड्थ कम कर सकें विदाउट ब्रिंगिंग ISI इन, वो हमारा टारगेट होगा. तो हम क्या करेंगे, हम जो भी फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे ऐसा होगा कि उसका एज स्टीप होगा, 90 डिग्रीज नहीं होगा लेकिन काफ़ी स्टीप होगा, अप्रोचिंग रेक्टेंगल. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ हाउ वी वांट टू डू पल्स शेपिंग to reduce our ISI. Okay, so one frequently used transfer function which belongs to the Nyquist class, यानी कि which can enable us to achieve zero ISI at the sampling times, is called the raised cosine filter. And this is what it looks like. So depending on the value of R, there are different shapes of this raised cosine filter, and mathematically it can be expressed as this: h of f is equal to 1 under certain conditions, 0 under certain conditions, and something between 0 and 1. तो कभी कभी पूरा फ्लैट हो जाता है, then it becomes 0, at its maximum it is 1, and the value is between 1 and 0 realistically. So in this figure and in this equation here, W is the absolute bandwidth and W naught is equal to 1 over 2 capital T, 1 over 2T. So that represents the minimum Nyquist bandwidth, this minimum Nyquist bandwidth for the rectangular spectrum, and it represents basically the minus 6 dB bandwidth or half amplitude point for the raised cosine spectrum. So this W naught here, it represents the Nyquist bandwidth for the rectangular spectrum. ये हमारा ideal case है. That's what this represents. And for the raised cosine spectrum, जिसकी ये मुख्तलिफ shapes हैं, it represents the minus 6 dB point या half amplitude point. ठीक है,
और ये जो डिफरेंस है W और W0 का डिफरेंस, so W, as you can see, the value of W can be greater than W0 realistically. Ideally W can be equal to W0, but realistically W will be greater than W0. So W minus W0 is called excess bandwidth. That is called excess bandwidth, which means that is the additional bandwidth beyond the Nyquist minimum. ठीक है. So for the rectangular spectrum आप देखें तो W will be equal to W0. For this W is greater than W0, and for this one W is even more greater than W0. ठीक है. इसी से रिलेटेड एक और फैक्टर है रोल ऑफ फैक्टर R. ये जो स्मॉल r है, दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ फैक्टर, एंड R, as you can see, is defined as R is the excess bandwidth divided by W0. तो ये एक रेशो है, एक नॉर्मलाइज्ड बैंडविड्थ आप इसे कह सकते हैं. सो R is W minus W0, the excess bandwidth, divided by W0. So the value of R will remain between 0 and 1. So it represents the excess bandwidth divided by the filter's minus 6 dB bandwidth. So इसको हम फ्रैक्शनल एक्सेस बैंडविड्थ कह सकते हैं. ठीक है, फ्रैक्शनल एक्सेस बैंडविड्थ कह सकते हैं हम R को. So for a given W0, the role of R it specifies the required excess bandwidth as a fraction of W0 and characterizes the steepness of the filter roll-off. तो अगर आप देखें R की वैल्यू जितनी 0 को अप्रोच करेगी उतनी उसकी स्टीपनेस बढ़ रही है, और R की वैल्यू जैसे 1 को अप्रोच करेगी तो उतना जो है ना उसकी स्टीपनेस कम हो रही है. तो यहाँ पे इस फिगर में 3 डिफरेंट R वैल्यूज़ के लिए कर्व्स दिखाए गए हों, R0, R.5 और R1. So the R is equal to 0 roll off is the Nyquist minimum bandwidth case, and note that when R is equal to 1, the required excess bandwidth is 100%. ठीक है. तो a system with such an overall spectral characteristic can provide a symbol rate of RS symbols per second using a bandwidth of RS hertz. ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये तो है इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन तस्वीर, ठीक है, लेकिन इसी तरह इसकी जो एक्विवेलेंट तस्वीर है टाइम डोमेन में वो भी हो सकती है, एंड दैट विल लुक लाइक दिस. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर रेक्ट है तो टाइम डोमेन में सिंक होगा, और ये बाकी जो हैं ये रेक्ट की अप्रॉक्सीमेशंस हैं, तो यहाँ पे वो सिंक की अप्रॉक्सीमेशंस होंगी. And basically what you see the relationship here is that when R is 1, the required excess bandwidth is 100%, but the tails are quite small. ये देखें आप, जब R 1 है, ठीक है, तो ये टेल जो है ये काफ़ी स्मॉल हो गई है, लेकिन एक्सेस बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई है. सो यू सी इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है. और दूसरी बात यह कि द टेल्स हैव ज़ीरो वैल्यू एट ईच पल्स सैम्पलिंग टाइम रिगार्डलेस ऑफ द रोल ऑफ वैल्यू. तो जब भी नेक्स्ट पल्स का सैम्पलिंग टाइम आएगा T, 2T, 3T, ठीक है, तो एज यू कैन सी द वैल्यूज़ ऑफ द टेल्स, कोई भी हो इनमें से, रोल ऑफ फैक्टर कोई भी हो, द वैल्यू ऑफ द टेल इज़ 0. और इसकी जो इक्वेशन है इस सिंक की, h(t) की, वो कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है. So this is called raised cosine. As you can see that it is it involves cosine terms. ठीक है. So this is a raised cosine filter. So strictly speaking, even the raised cosine spectrum is not physically realizable. अगर हम वो rectangular sense में ले, because it gives infinite impulse response and it is non-causal. It starts from minus infinity and goes to plus infinity, so it's non-causal. Whereas a realizable filter must have an impulse response of finite duration, and it must show zero output prior to pulse turn on time, which is not the case here. So the pulse shaping filter should provide the desired roll-off, and it should be desirable, it should be realizable, practically realizable.
So these are a couple of notes we want to take further with us. बहरहाल जितना वो आइडियल रेक्टेंगल से दूर होगा उतना ही उसके लिए प्रैक्टिकली रियलाइजेबल होना पॉसिबल होगा. तो अभी तो हमने देखा कि जैसे अगर हमारा रोल ऑफ चेंज होता है तो हमारा जो बैंडविड्थ है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो अगर हम सबसे पहले बात करें मिनिमम रिक्वायर्ड सिस्टम बैंडविड्थ की, अगर उसे हम W कहें फॉर अ सिंपल रेट ऑफ RS सिम्बल्स पर सेकंड विदाउट ISI, तो वी नो फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज कि वो RS/2 हर्ट्ज़ है. लेकिन ये तो मिनिमम है, ये तो उस रेक्टेंगुलर ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ आएगी. Whereas अगर हम रोल ऑफ वाली तस्वीर को जहन में रखें, रेस्ट कोसाइन को जहन में रखें, सो अ मोर जनरल रिलेशनशिप कुड बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन that W is not equal to RS/2 but W is equal to RS/2 multiplied by 1 plus R. अब अगर जिस केस में R 0 होगा वो आइडियल केस, तो ऑब्वियसली RS/2 बन जाती है. लेकिन अगर R 0 नहीं है, R की कोई ना कोई वैल्यू है, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ R हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी to achieve that simple transmission rate of RS/2. So that is a more general relationship. ASK और PSK जैसा हमने कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ा कि उनकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं. तो जनरली द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इक्विवेलेंट बेसबैंड सिग्नल्स उसके मुकाबले में मॉड्यूलेटेड या ट्रांसमिटेड सिग्नल को 2 टाइम्स द बैंडविड्थ चाहिए होती है. तो अगर ASK और PSK के लिए हम इस W के एक्सप्रेशन को देखें कि कितनी सिस्टम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होगी, तो वो हो जाएगा उसमें से डिवाइड बाय 2 हट जाएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स दैट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R इंटू RS. तो ये बेसिकली कुछ बैंडविड्थ कंसिडरेशंस थी रिलेटेड टू द सिंबल ट्रांसमिशन रेट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम किस तरह से 0 ISI अचीव कर सकते हैं.